Hello guys, welcome back to the channel. In the last lecture, we started our discussion on topology of metric spaces and we discussed about open and closed balls. Continuing our lecture on topology, in this lecture we will start with open sets. First, please make sure that you have watched the previous video and then you see this video. Open sets. Okay. So let XD be a matrix space and G be any subset of metric space XD. Then G is said to be an open set if for each x belonging to G, there exists an open ball SXR contained in G. Okay, so open set क्या होता है? अगर हमारे पास कोई भी एक मेट्रिक स्पेस गिवन है XG और G उसका कोई भी सबसेट है, तो G को हम ओपन सेट तब कहेंगे अगर हर x के लिए जो कि G में है एक ओपन बॉल मिल जाए जो G के अंदर कंटेन हो। फॉर यानी कि G एक सबसेट है और हर G के हर पॉइंट के लिए हमें एक ओपन बॉल मिल जाए जो ओपन बॉल इसी G के अंदर कंटेन्ड हो। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि G एक ओपन सेट। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी डेफिनेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरी पॉइंट ऑफ G is the center of some ball in G। मतलब G का हर पॉइंट किसी ना किसी बॉल का सेंटर होगा और वो बॉल G के अंदर कंटेन होगा। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि G एक ओपन सेट है। ओके, सो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ ओपन सेट। Examples of open set. Consider the example of real numbers minus infinity to infinity. So if we take any point in this interval, we can find an open ball that is contained in R. So it is an open set. R is an open set. But if we consider the example of Z, that is the set of integers. So if we take, for example, 1 belongs to Z and we construct an open ball and take R as suppose 1 by 2. So the open ball will contain 1 minus 1 by 2, comma 1 plus 1 by 2. Okay, which will be minus 1 by 2 to 3 by 2. Will it be contained in Z? Because these are fractions, so this will not be contained in Z. So Z is not an open set because we are getting an integer 1 belonging to Z and corresponding to 1 we are getting a ball, an open ball which is not contained in Z. Okay, मतलब हमें एक ओपन बॉल मिल रही है लेकिन वो ओपन बॉल Z के अंदर कंटेन्ड नहीं है, यानी कि Z एक ओपन सेट नहीं है। सिमिलरली अगर हम रैशनल्स को कंसिडर करें, सेट ऑफ रैशनल्स Q, तो ये भी नॉट ओपन है बिकॉज Q के करस्पॉन्डिंग आप कोई भी रैशनल नंबर लोगे उसके करस्पॉन्डिंग अगर आप एक ओपन बॉल कंस्ट्रक्ट करोगे तो उसमें इनफाइनाइटली मेनी इरैशनल्स भी होंगे which will not be a subset of rationals. So Q is not an open set. Okay, we have a theorem. Next we have a theorem. Every open ball in a matrix space XT is an open set. Okay, every open ball is an open set. अब इसको प्रूफ करना सिंपल है काफी।
हमें ओपन बॉल को ओपन सेट प्रूफ करना है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि हर ओपन बॉल का कोई भी अगर हम एक एलिमेंट ले, उसके कोरस्पॉन्डिंग एक हमें ओपन बॉल मिल जाए जो उसी के अंदर कंटेन्ड। ओके, सो लेट XD be a matrix space and SXR be an open ball. Be an open ball with center X and radius R. Clearly, X will be there in SXR. X is the center, so S is non-empty. तो हमें क्या करना है कि इसमें हम कोई भी एलिमेंट लेंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग हम एक ओपन बॉल ढूंढेंगे। ओके, लेट y belongs to SXR. So by definition of open ball, y अगर XXR में है तो distance between x and y is strictly less than r. ओके, अगर आप इसको एक तरह ऐसे समझो, ये बॉल है XXR, it is an open ball, center is x and this radius is r. We are taking any other point y, this dxy is less than r, this dxy is less than this r. Okay, and this is also r. Okay, this complete is also r. So if we take y as center and consider r minus dxy as the radius, so dxy is less than r, then r minus dxy would be greater than 0. We are taking r prime as r minus dxy. r minus dxy को मैंने r prime ले लिया, तो यानी कि ये जो होगा ये सेंटर हो जाएगा। अब इसको देखो, अब ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गया, दिस इज r minus dxy which is r prime. Okay, so this is the radius for center this, and we can construct an open ball. Okay, now we are seeing that whether this ball will be contained in SXR or not. Okay, so our claim is the ball S with center at y and radius r prime is contained in XXR. If it is contained in XXR, it means that every point SXR में हर एक पॉइंट के लिए हमें एक ओपन बॉल मिल जाएगी जो उसके अंदर कंटेन्ड हो, तो यानी कि वो एक ओपन सेट हो जाए। ओके, तो अब हमें ये शो करना है कि एस वाई आर प्राइम इज कंटेन्ड इन एस एक्स एक्स प्राइम, तो यानी कि इसका हम कोई भी एलिमेंट लेंगे और उसको हम प्रूव कर देंगे कि वो इसमें है, तो हमारा काम हो जाएगा। सो लेट z बिलोंग्स टू एस वाई आर प्राइम। तो z एस वाई आर प्राइम में है, तो इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन y and z is strictly less than r prime. Okay, now consider distance between x and z. This would be less than equals to distance between xy plus distance between yz, because dx is a metric space and in a matrix space triangle inequality holds. This is because of triangle inequality. Now dyz is less than r prime, strictly less than r prime, so we can say this is strictly less than dxy plus r prime. Now dxy plus r prime is dxy plus r prime is r, so we can say dxz is strictly less than r. तो ये ओपन बॉल की डेफिनेशन हो गई। अगर dxz स्ट्रिक्टली लेस देन r है तो यानी कि z बिलोंग करेगा SXR में, है ना। SXR एक ओपन बॉल है जिसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनका डिस्टेंस x से लेस देन r है, तो z के साथ डिस्टेंस x का लेस देन r आ रहा है, तो यानी कि z विल बिलोंग टू SXR। और हमने लिया क्या था कि z जो है वो SYR प्राइम में है, सो फॉर z बिलोंगिंग टू SYR implies z is belonging to SXR, and we have taken any z. Z is arbitrary,
तो ये हर z के लिए होल्ड करेगा. दिस implies SYR is contained inside SYR prime is contained inside SXR. ओके, यानी कि y जो कि x SXR का एक एलिमेंट था, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एक ओपन बॉल मिल गई SYR prime which is contained in SXR. और क्योंकि y भी आर्बिट्ररी था, since y is arbitrary, this implies for every point y which is belonging to SXR, we can find we can we can find an open ball contained in SXR. तो यही डेफिनेशन होती है ओपन सेट की. This implies SXR is an open set. And SXR था क्या? एक ओपन बॉल था. This implies every open ball is an open set. Okay. अब इसमें एक इंपॉर्टेंट रिमार्क है, इसका कन्वर्स जरूरी नहीं है सही हो. Converse need not to be true because एग्जाम्पल देखिए 0 1 union 2 3. 0 1 is an open ball, it is an open set. This is also an open set, but this is not. So these two are open sets, इनका यूनियन भी ओपन सेट होगा. तो यानी कि 0,1 union 2,3 is an open set, but it is not an open ball. Okay, so converse is not true. So that's it.